Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to New Adventure with Boyke. Vandaag gaan we naar de Bihar Food and Cultural Festival in Amstelveen. Vandaag gaan we diverse food reviews doen, een impressie geven van wat te beleven valt. En natuurlijk, niet te vergeten, gaan we op zoek naar de connectie tussen de Surinaamse Hindoestanen en de Hindoestanen uit India. Ja, dus we gaan kijken wat er te beleven valt. Dus hop on and let's go on this adventure. Oké, kom er gewoon binnen. Natuurlijk ben ik vandaag niet alleen. Ik heb assistentie. En wie heb ik naast me? Hey! Ja, die kennen jullie vast wel allemaal. Ja, natuurlijk. Dit is Lalita, jongens. Hey Lalita. Hey Lalita, welkom, welkom. Ja. Hey, leuk man, leuk. Hey, ik ben benieuwd. Ik ook, want het is het eerste event Ja. van Bhojpuri. Dus ik ben helemaal... Ik weet niks. Dus het is heel leuk, want we gaan ons laten verrassen. Gaan jullie ook mee? Jazeker, zeker. Oké. Litti chokha. Oké, thank you. Beta bora. Litti chokha milega ja. Zo, dit is litti chokha Ja, en wat... en buttermilk. En nog een keer? Litti chokha. Dus Litti dat is, chokha. wij kennen chokha. Ja. Als Hindustanen. Ja. En dat is, dat komt dus eigenlijk daar vandaan. Het is met bacon, Ja. aubergine gemaakt. Ja. En er zit een soort klein koekje, roti. Nou, dit is dus dan de Buttermilk. buttermilk. Nou, We gaan proeven, hè. oké. Ik zei het, iets met yoghurt zit erin. Ja. En het is zoet, maar het is ook scherp. Ja. Want Indiërs die gebruiken vaak heel veel dingen met mirch, peper. En dat proef je hierin ook. En er zitten wat kruiden in. Ik proef. Kijk. Ja. Dus ja. Ja, of course, ja. Of course. Ja. Hij is een beetje... ik vroeg... in Nederland. Ja, natuurlijk. Ja. Er zit ook munt in, dus Ja. dat proef ik wel. Ja, nee, En, podina. Podina, ja. Maar is toch munt? Nee. Of koriander? Is het koriander? Is het Ja, koriander? koriander, hè. Nou, oké. Is niet mijn favoriet. Ik ben sowieso niet van de melkproducten. Ja. Nou, oké, maar na de tweede slok, ja, is het wel te... Is het- ja. Ja. De eerste is een beetje, omdat je het niet kent, is het Ja. een beetje schrikken. Exact. Ja. En deze ben ik ook wel heel erg benieuwd. Litti chokha. Ik ook. Ik hoop niet dat het heet is. Nee, als je het heet, maar het is wel machtig. Wel heet voor mij, mensen. Heet. Ja. Chokhai. Ja. Chokha. Klopt. Waar is die mee gevuld? Ik weet niet. Maar Voor zal daal. Er zit een sandaal in. En alles is heet. Nee, ik heb dit nog nooit gehad. Ik dit ook niet. Je ziet ook de bacon, hè? Wat is het? Ik weet nog steeds Kijk. niet. Dat is ook Oké. Ja. Ja. Litti chokha. Dus. Het is echte chokha, hè? Het is met aubergine, heel veel peper. En al die dipjes wat ze dan allemaal hebben. Overal zit peper in. Ik vind het wel mooi zo. Oké. Ik ben niet zo van de peper, hè? Vind je het lekker? Even wennen. Ja? Ik vind het niet lekker. Oh. Peper, hè? Maar het is peper, maar er zitten veel dingen in, hè? Heel veel kruiden vind ik. Matcha. Ja, dus alles is heet. Maar dit eet jij geen 10 op. Dit deed ik nog eens een halve op. Als het erbij. Oké, nou mensen. Oh, jouw Ja. drink is al bijna op. Ja, maar ik hou het hierbij. Ja, hè? Ja. Hoe lekker het ook mag zijn, ik hou het hierbij. Oké, en dan gaan we nu iets verder kijken.
भारत माता की जय भारत माता की जय। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। Bekende. With beautiful performance. Thank you, girls. You're awesome. Ik kijk leuke churras, hè? Voor de kleinkindjes. Kleine Kleine kindjes. Zo schattig. Ik kan er maar alleen maar met 2 vingertjes in hoor. Maar het is toch heel mooi en klein. Wow, die is wel groot. Ja, in India dragen de vrouwen vaak hè, hele rijen churia's. Ja. En vooral als ze dan trouwen, Ja. dan hebben ze churia's van hier tot hier. Oh, oké. Want alle familieleden geven ze. En het mooie of vervelende is, je mag ze niet afdoen een aantal dagen, wat weken, zolang alle ceremonies nog lopen. En dan ben je aan het baden. Kan je er iets bij voorstellen dat er allemaal water onder komt, onder mijn churia's? En ik kan het niet, dat is tot hier. Ja. En ik kan het niet drogen, gaat jeuken in de warmte. Dus het is wel heel mooi, maar ja, soms zijn traditionele dingen toch soms niet altijd even prettig. Oké. Maar kijk. Ja. Weet je wat ik echt mooi vind? Al die Nou, kleuren, hè? ja. Echt contrast van elkaar. Ja. Ja, dat is zo mooi van India sowieso. Niet alleen churia's, maar ook kleding, alles. Nou, de schoenen. Kijk, een en al kleur. De bindis. Ook een en al kleur. En dan mehendi die we Ja. dan zetten, ook. Dus het is, India heeft een heel mooie cultuur als het gaat om ja, kleurrijk en dat soort dingen. Ja. En dit zijn de saris? Nee, dit zijn de ghagras, denk ik. De ghagras? Of, ja. En daar hebben we voor de kinderen allerlei dingen. Kijk, zo mooi. Hier zijn saris. Ja. Moet je kijken. Heel leuk, hè? Ja. Voor kinderen. नमस्कार दोस्तों सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद En kijk, zo schattig. Voor meisjes. Nou. En een tasje erbij. Kijk. Het lijkt wel een Louis Vuitton tasje, hè? Ja. Kijk, zo hoort het. Dit is toch superleuk? Ja, zeker, zeker, zeker. Dan, ik heb gehoord dat u een heel grote of bekende Bihar-zanger bent. Ik ben een Surinaamse zanger. Een Surinaamse zanger. Ja, die hier woont. Ja. Maar niet zo groot, want jij kent me niet. Nee. Maar hey, nu, ja, maar het is, ik mag nu kennis met u dan. En ja, wat voor liedjes zingt u dan precies? Ik zing liederen in onze eigen taal. Ja, dus dat naam? Niet de Hindustaanse taal. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, en een bekende liedje wat u gezongen heeft? Champlaki, Doi Mutti. We hebben Awajahi. In India kennen ze de liederen Ja, wel. oh, oké. Hier niet zo, maar... Ja. Maar, anyhow, Ja. nu weet ik. Ja. Gaat u vandaag zingen? Nee, ik ben niet als gast. Oh, oké. Oh, wat jammer nou. Ik dacht, als ik zingen, dan kon ik Ja. misschien wat... Was een mooie gelegenheid. Ja. Oh, ik dacht ook je gaat zingen. Ik denk je gaat zingen. Nee, het was
Nee, ik dank je. Nou, dat gaat goed. Ja? Oké, nou leuk, dankjewel. Alsjeblieft, Boyke. Ja. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Yes, sir. Dus kijk, dat heeft ze allemaal zelf gemaakt, met de hand gemaakt. Moet je kijken. Wauw. What material is this? What material is this? It's not just normal paper. This is paper. This is like Just- 300 GSM. It's a thicker paper. Okay, okay. And what kind of paint you use? Because this is It's acrylic. just acrylic. Yes. Everything Okay. is acrylic, and the outline is ink. It's really beautiful. Do you have any questions? Yeah, it's really nice. Sorry. Oh. And this? So you made this from bottles? Yes, these are water Just- bottles, and this is clay. Okay. Oké. This is clay. Wow. So I saw some God also on the bottles. Is it has a meaning, or is it just that? This is Shiv Shakti. Yeah, This is I- Shiv. yeah. This is Shakti. Oké. But why on a bottle? Because our first thought was, उसमें तो दारू जाता है. But what is your thought about it? Then actually my thought about it is just that I wanted to take a break from flat surface and wanted to do something different. So that is why the bottle is. Okay, okay, good, very good. Thank you. एक शुरू में एक सवाल पूछा गया था कि यहाँ बिहार के कितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि यहाँ बिहार के लोग हों या उत्तर प्रदेश के हों या झारखंड के हों या सूरीनाम के हों या किसी भी देश, किसी भी राज्य के हों, यहाँ पे आज सब भारत की अपनी अपने अपने जगह की लोकल मिट्टी की खुशबू को उसका आनंद उठाने के लिए एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बिहार फाउंडेशन का और सारे अधिकारियों का, आप सबों का धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि हम सब लोग जो भाषा, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी अपनी स्थानीय संस्कृति है और अपनी स्थानीय भाषा है, अपना स्थानीय मज़ा है, खाना है, अपने सामान है, अपनी चीज़ें हैं, उनको हम लोग आज आनंद उठाने के इकट्ठे हुए हैं। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ करके मुझे जैसे अपने घर में आने की जैसी भावना होती है वैसी लग रही है, और बिल्कुल इसलिए आप सबों को आज के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आज का कार्यक्रम एंजॉय करिए और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नेदरलैंड के क्या उनके विजन है लेकर, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ जयंत जी। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम जयंत शांडिल्य है और मेरा घर मुजफ्फरपुर बिहार और नीदरलैंड में पिछले 10 सालों से हूँ। बिहार फाउंडेशन में सेक्रेटरी हूँ, बट मैं यहाँ पे आया हूँ ये बताने कि हमारा बिहार फाउंडेशन एक्चुअली क्या करना चाह रहा है और क्यों हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो बिहार फाउंडेशन एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक एफिलिएटेड बॉडी होती है जो इंडिया में है, बिहार में, और आउटसाइड बिहार, वो बिहार देश के अंदर में हो, भारत के अंदर में या भारत से बाहर, तो बिहार फाउंडेशन उसके चैप्टर्स बनाते हैं। तो नीदरलैंड में हमारा बिहार फाउंडेशन नीदरलैंड चैप्टर है, और हमारा विजन जो बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है वो बेसिकली बेस्ड है 3 वर्ड्स पे। फर्स्ट इज बॉन्डिंग, सेकंड इज ब्रांडिंग एंड थर्ड इज बिजनेस। तो जैसा कि बॉन्डिंग से पता चलता है कि हमारा विजन क्या है, तो जैसे ये एनआरबीज के लिए, नॉन रेजिडेंट बिहारीज के लिए है, तो देश के बाहर या राज्य के बाहर उनके बीच एक सौहार्द बना रहे, कोलैबोरेशन बना रहे, उसके लिए बॉन्डिंग है। बट यहाँ आउटसाइड इंडिया इसका स्कोप बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ बिहारियों के बीच का नहीं है, ये बिहार और इसकी संस्कृति से मेलजोल खाते लोगों के बीच का ये बॉन्डिंग बनाना है, और उसको लेकर के नेशनल लेवल पे, मतलब भारत के लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनाना है। तो नीदरलैंड में हमारा सबसे बड़ा बॉन्डिंग का जो स्कोप है, और हम लोग चाहते हैं बिहार, यूपी, झारखंड और हिंदुस्तानी सुनामी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 150 साल पहले सब बिहार के और उसी एरिया से थे। हमारी संस्कृति एक जैसी है, खान पान सारा एक जैसा है। तो हमारा ये विज़न है कि हम एक बॉन्डिंग बनाएं सब लोगों के बीच में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ब्रांडिंग, सो वी मेक आवरसेल्फ एज अ ब्रांड, whether it's a national brand, international brand, but we make ourselves as a संस्कृति के रूप में या खान पान के रूप में हमारे कोलैबोरेशन जिस तरीके से होते हैं एक ब्रांड बनाएं। And then the third things will come
ऑटोमेटिकली। सो दैट्स द विजन ऑफ बिहार फाउंडेशन, और उसी को लेकर के हमने यहाँ पे लोगों के बीच हमने प्रमोट किया। हमारे यहाँ बिहार से, झारखंड से, यूपी से और हिंदुस्तानी सुरीनामी जो सुरीनाम से यहाँ पे आए हुए हैं, उनके बीच हमारा ये कोलैबोरेटिव इवेंट है। और इसको ये हमारा मतलब इस लेवल पे फर्स्ट इवेंट है। इससे पहले हम लोग 9 मार्च को मिले थे, एक छोटी सी कम्युनिटी हम लोग गेट टुगेदर किए थे, बट इस लेवल पे ये हमारा पहला कदम है और आशा करते हैं कि इसको आगे से आगे और बढ़ाया जाएगा, जो कि हमारे सब के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर के बिहार फाउंडेशन काम कर रहा है और आप सबके सहयोग से हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। सामने आ रहे हैं आपकी प्यार की तालियों के साथ डॉक्टर हरी शर्मा जी। नमस्ते सभी को। हम उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी का पड़ोसी हैं, और दोनों स्टेट्स की जो कल्चर है बहुत मिलती जुलती है और उनकी जो काम करने का तरीका भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड IAS, IFS, IPS दोनों स्टेट से खूब आते हैं, बट ऑब्वियसली अभी जो डिबेट हो रही थी उसमें दोनों चीज़ आई विल वोट फॉर दैट कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल कमिंग फ्रॉम बिहार। हम लोग सब हिंदी बोलते हैं, थोड़ा बहुत डायलेक्ट इधर उधर, भोजपुरी, हिंदी, लेकिन लिखने का तरीका देवनागरी है सभी का। तो मेरा सिर्फ कहने का ये है कि हम सब लोग मिल कर के जो हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, सबके बच्चे छोटे और प्राइमरी स्कूल या फिर मिडिल वार जो यहाँ के जो यहाँ स्कूल्स होते हैं उसमें जा रहे हैं, हमारी सबसे गुजारिश, सबसे प्रार्थना ये है कि उनको अपना कल्चर, अपना तौर तरीका, खाने से लेकर के, वेशभूषा से लेकर के और अपनी भाषा ज़रूर सिखाइए उनको, क्योंकि वो आप दे देंगे ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि साहब हम मतलब अपनी भाषा बोलते हैं, और उनको बड़ा गर्व होगा जब वो 25 साल के होंगे, इंडस्ट्री आएंगे, उनको बहुत गर्व महसूस होगा। और अपना ऑब्वियसली कल्चर जो अपना हेरिटेज है, बड़ों का आदर करना, जैसे चरण स्पर्श की हम लोगों का एक बहुत ही स्पेशल कल्चर है, उसको ज़रूर देना। तो सभी पेरेंट्स से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, भले ही आप इंग्लिश में सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जो लोग आए हैं भारत से वो सब ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, अपने बच्चों से दिन भर इंग्लिश में बात करते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि भाई अपनी मातृभाषा भी जो आप सीखी है माता से, अपने पेरेंट्स से, उसको भी अपने बच्चों को आगे जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनको दें। एंड हम लोग कोलैबोरेट करते रहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग बिहार के साथ, और बड़ी इवेंट्स फ्यूचर में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे त्यौहार सभी करीब सब मिलते जुलते हैं। तो इन सब शब्दों के साथ, एक पॉजिटिव माहौल के साथ, और यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, और खासकर महानुभाव और हमारे एम्बेसडर जो कि पूरे भारत को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जो यहाँ पे कार्यशैली है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी कल्चर के साथ साथ बिजनेस का भी। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं इतने समय से भारत नेदरलैंड का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, 4th लार्जेस्ट म्यूचुअल इन्वेस्टर्स है दोनों कंट्री के। तो बहुत काम होता है भारत और उनके बीच में, बहुत बिजनेस ही नहीं, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेके। तो हम लोग उसमें सब सहयोग करें, सभी लोग जो यूपी उत्तर प्रदेश के हैं, और अपनी मातृभूमि के लिए एक प्रण लें, प्रज्ञा रखें। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ मेरा यही आपसे प्रार्थना है कि खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए। और खाना भी यहाँ बताते हैं कि टिपिकल बिहार का खाना भी यहाँ आज मिल रहा है, तो वो सब खूब एंजॉय कीजिए। और कुछ लोगों की यहाँ एग्जिबिट भी लगी हुई है, वो भी सब देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। एंड देन लेट्स डू एवरीथिंग टुगेदर इन फ्यूचर एज वेल। बहुत धन्यवाद। सीताराम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। हम हैं बेटे सिस्टर्स,
हम सब नामी गाना बजाना कर रहे हैं, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं एक माटीकोर की गाना पेश करने जा रही हूँ। और माटीकोर कहते हैं कि जब विवाह संस्कार होता है तो पहले धरती माता से प्रार्थना करते हैं, और धरती माता के बाद हम श्री गणेश और गौरी माता के प्रार्थना करते हैं कि विवाह संस्कार अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो देवर बाबा नाम तुम्हारो। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो धरती मैया नाम तुम्हारो, पूजो धरती मैया नाम तिहारो। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो धरती मैया नाम तिहारो, पूजो धरती मैया नाम तुम्हारो, पूजो धरती मैया नाम तिहारो। हरे भरोसे मैया मैं जागरो प्यो, हरे भरोसे मैया मैं जागरो प्यो, हरे भरोसे मैया मैं जागरो प्यो, हरे भरोसे मैया मैं जागरो प्यो। मोरी जग पूरन हो मोरी रामा, मोरी जग पूरन हो मोरी रामा, मोरी जग पूरन हो मोरी रामा, मोरी जग पूरन हो मोरी रामा। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो धरती मैया नाम तुम्हारो। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो धरती मैया नाम तुम्हारो। आओ त्योहार बाबा बैठो मोरे अंगने, आओ त्योहार बाबा बैठो मोरे अंगने, आओ त्योहार बाबा बैठो मोरे अंगने, आओ त्योहार बाबा बैठो मोरे अंगने। मोरी जग पूरन होई हो रामा, मोरी जग पूरन होई हो रामा, मोरी जग पूरन होई हो रामा, मोरी जग पूरन होई हो रामा। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो धरती मैया नाम तुम्हारो। गौरी पूजो गौरी गणेश हो, पूजो धरती मैया नाम तिहारो, पूजो धरती मैया नाम तिहारो, पूजो धरती मैया नाम तिहारो। और ब्याह के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याह के बाद जब लड़का पैदा होता है तो उसके एक संस्कार और होता है जो है मुंडन संस्कार, तो उसकी एक गाना भी हम पेश करने जा रहे हैं। कवन फल खायो सैया मधुबन बाकी लगायो, कवन फल खायो सैया मधुबन बाकी लगायो, कवन फल खायो, कवन फल खायो, कवन फल खायो, कवन फल खायो, कवन फल
नंदी जो आवे वही रुक कुछ भाभी कौना की कर परछाई ललन बड़ी सुंदर भाभी कौना की परछाई ललन बड़ी सुंदर सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खायो सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खायो 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 ना सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खायो सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खायो सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खायो थैंक यू सर के लिए। और एक गाना है जो मैंने खुद लिखा है, तो वो एक प्रेम मिलाप के गाना है, लेकिन उसमें तनी से जेलसी भी है, तनी से मनमुटाव भी है, और उस गाने को मैं पेश करना चाहती हूँ। जाने रही बलमा हाँ जाने रही बलमा हम तो है फसई में जाने रही बलमा हम तो है फसई में जाने रही बलमा चल हिरनी की चाल मठे में हरी चाल चल हिरनी की चाल मठे में हरी चाल हाँ दुनिया भूलइए हाँ दुनिया भूलइए जब तो है नचई में जान रही बलमा हम तो है फसई में जान रही बलमा मेरी दिल की है पुकार बनी तू मेरा यार मेरी दिल की है पुकार बनी तू मेरा यार हाँ सुन सहे कहिए हाँ दुनिया सुन सही मजा उनसे लुटाई में जान रही बलमा हम तो है फसई में जान रही बलमा जान रही बलमा हम तो है फसई में 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 जान रही बलमा हम तो है फसई में। वाह 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 कला के लिए धन्यवाद। Oké, wat we hier hebben, Ja. roti, naan, chawal, jackfruit, Ja. dit is curry, Ja. stijl, en dit is chana. En natuurlijk gewoon de dingen die wij kennen, hè? Ja, ja. Dat is allemaal bekend. En rasmalai als toetje. Ja, die heb ik ook. Ik heb ook jackfruit, maar ik heb alleen
in plaats van chana heb ik vlees. Kip. We gaan het proeven. Oké. Ik ben benieuwd. Ik ook. En die eten we met 1 hand. Ja. Oh. Ja, die dien je zo kapot te maken. Nou, En het heeft allemaal een reden waarom je met 1 hand dat weet ik gaat ook. eten. Ja. Dus je gaat dat ook lekker leren. We gaan het proberen. Wat hè? Het is best wel lekker. Ja. Hij is pittig hoor, hè? Ja. India's eten hè? Ja. Altijd overal maar nieuws. Zelfs in die jackfruit zit bijvoorbeeld. Oh. Nou, dat wordt al wat. De chana was goed. Ik ga nu de curry proeven. Kijk. Nou, het is anders. Het is heel anders dan onze eigen curry. Klopt? Ja. Hij is lekker, maar hij is heet. Heet, ja. Heel kruidig. Ja, ze kruiden heel veel. En dat is ook verschillend waar je in India bent. Op sommige plaatsen dan is het nog extremer gekruid. Echt? Ja. En dan weer andere plaatsen waar het iets minder is. Maar dit is zeker heel erg gekruid. Maar in principe is het concept wel goed, hè? Je hebt kip, je hebt curry, ja, en je hebt kathar. En je staan eten gewoon, ja. Dus ook Suriname eten wij kathar, ja. Dus het is wel bekend, maar toch, Ja. als je een hap neemt, denk je van, oh, oké. Maar deze kattehar, Ja. dit is blik kattehar, hè? Oh, oké. Oh. Dit komt uit de blik. Wij Hindustanen, we eten vers uit de boom. Ik hoor heel weinig Hindustaanse mensen die dan zeggen van, dat die kattehar uit de blik heeft gehaald. Maar tegenwoordig, als je kathar koopt, want het duurt ongeveer een eeuw voordat het ding helemaal gekookt is. Dus een blik kathar is van makkelijk. Ja, dit is blik kattehar. Het Ismalai is niet wat ik gewend ben. Oh. Ik ben een beetje verwend, zeg je eerlijk. In Rotterdam, ik had een, oh, moet ik dat zeker zeggen? Ik had een vriendin in Rotterdam. Ja. En van haar, nee. En van haar heb ik dus Ratwayu leren eten bij dinges. Hoe heet het alweer? In Rotterdam eten. Oh. En dat was echt super lekker. Was van een Pakistaanse man. Oh ja. En ook de samosas echt gevuld met kip. Heerlijk. Lekker. Ja. Ja, dit is ook niet de rasmalai die ik ken. Hij is ook niet heel zoet, maar ook, ik proef niet echt iets. Want normaal moet dit is zo vast. Normaal is het wat zachter. Veel zachter. Oh ja. Chalega. Chalega. Nou, lieve mensen, hij is super pittig voor mij. Voor mij ook. Ja. Voor mij ook. Oké. Maar het was de moeite waard om het even te proberen, toch? Zeker. Anders zou ik het niet weten. Anders zou je het nooit weten, nee. Dus dat. En de rasmalai Ja. was ook oké. Kijk maar, ik heb hem... Hij heeft hem al opgedronken. Ja. Hey Lalita. Hey Boyke. Nou, nu zitten we, hey. Goh. Eindelijk hè? Ja. Wat een festival, hè. Ja, Goh. dat hebben ze leuk gedaan. Zeker Ja. voor het eerste keer. Aha. En het was echt full house. Ja. Ja, zeker En weten. super warm. Het was Goh. heel warm, maar het is vandaag ook een warme dag. Ja, oké. Ja, dat is ook wel zo, maar binnen was de temperatuur eigenlijk een beetje iets te hoog. Ja, hè. Ja. Maar je hebt er wel van genoten. Ik heb ook gedanst. Hey, jongen, echt, hè. Volgens mij, ik zeg niks meer. Ik weet het nu. Als Lalita op een feestje is, Altijd dansen. wordt er altijd gedanst. Ja, mijn vader en mijn moeder die Ja. waren bekend om het echtpaar dat altijd danste. En ze dansten echt vanaf het eerste nummer Aha. tot het laatste nummer. Ook al waren ze al 80, ze dansten. Oké. Ja. Nou, dat geloof ik meteen, hè.
Hey, en wat vond je van het eten? Het eten was niet mijn manier van koken en van eten. Ik vond het allemaal veel te heet, Ja. maar, en ook veel te gekruid. Dus Ja. het was niet mijn eten. Ja, ja, maar we ja. hebben het toch wel allemaal geprobeerd. Ja, zeker. Ja. Ja, ik vond het zelf, het eten vond ik zelf, ja. Hij was heet. Hij was kruidig heet. Ja. Klopt. En ik ben wat gewend, maar dit is echt, nee. Nee. Ik pas dan, snap je? Ja. Maar ik heb het wel geprobeerd. Precies. Ja. We hebben alles even uitgeprobeerd. Ja, En dan ja. pas weet je Ja. wat het is. Want als je het niet uitprobeert, weet je Ja. niet. Maar India's eten is over het algemeen best veel mirch, Ja. wat ze steeds erin gooien. Ja, dat was zeker. Nou Ja. ja, ik heb er ook heel veel van genoten. Ik heb nieuwe mensen ontmoet. Ja. Ja, was wel heel leuk. Ja. Ze hebben het leuk georganiseerd. Ja, en ik zag ook de Ambassadeur? ambassadeur van India heb ik gezien. Ja, klopt. Ja. Dus En leuk. de Baituk sister. Ja. En nog heel veel andere mensen natuurlijk. Ja. Ik heb ze wel gesproken, maar niet kunnen filmen. Maar ja, dat heb je altijd natuurlijk. Sommige mensen willen niet in de camera, of niet op de camera. Dus ja. Mhm. Nou, heb je nog een laatste woord? Of iets wat je nog wil zeggen? Ja, en lieve mensen, willen jullie volgen wat Quality for Life Foundation doet voor de mensheid in India, maar ook zeker in Suriname? Volg ons. Kijk op Quality for Life Foundation, op ons Facebook site en Instagram. Op onze website www.q4lfoundation.com en dan kun je zien wat voor mooi werk wij allemaal doen. Dus volg ons. Ja, en vergeet ook niet te doneren. Exact. Ja. Want, lieve mensen, een stichting die kan alleen maar andere mensen helpen als wij donateurs hebben. Tot op vandaag, we bestaan al 10 jaar, is het alleen maar op basis van donatie. Dus heel belangrijk, doneer. Mijn slogan, elke euro die je doneert uit je hart is van harte welkom. Dus, bij deze. Oké, nou, ik ga meteen een donatie doen, Lalita. Ja. Dus dat komt goed. Ja? Zo begint het. Oké. En alle kleine beetjes helpen. Ja. Deze nieuwe organisatie, gewoon heel veel succes. En dat ze gewoon veel meer dit soort dingen organiseren om mensen te verbinden. En ook voor kinderen, hè, wat ze dan ook zelf zeggen. De taal blijven spreken, dus Hindustani bolal kariyo. En je eigen cultuur, heel belangrijk. Maar dat zijn 2 belangrijke dingen. Je taal, dat geeft je identiteit aan. En als je wat weet over je eigen cultuur, is ook heel belangrijk. Dus mensen, go for it. Ja. En volgend jaar weer? En volgend jaar weer. Ja. Oké. zeker. Nou ja. Dus we zijn er weer, ja. En aanstaande vrijdag, ja, want dit ga ik zo snel mogelijk natuurlijk weer uploaden. Aanstaande vrijdag, als je me wilt zien, Milan Zoetermeer ben ik er. En ook zondag ben ik ook op Milan Zoetermeer, maar zaterdag niet. Dus dan weet je dat ook. Oké, nou mensen, dankjewel voor het kijken. Graag wil ik iedereen bedanken. Graag wil ik ook Lalita bedanken. Graag gedaan, Boyke. En ik wil iedereen bedanken voor het, die het gezorgd heeft dat dit eigenlijk goed gelopen heeft allemaal. En don't forget, like and subscribe. Until next time. Bye bye. मैं आया हूँ ठीक है दिवाली थोड़ा टाइट हुआ था क्योंकि दिवाली में बहुत जगह हो रहा था Can we have a photo, please? Okay, thank you very much. Thank you. Wonderful being here. Okay. ये यूट्यूबर है सर